हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कंप्यूटर अवेयरनेस हम लोग कर रहे थे और ये आज का टॉपिक है ये सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर के बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, डाटा होता है, प्रोग्राम्स होता है यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर। ठीक है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसका? डाटा, प्रोग्राम, डाटा और प्रोग्राम जिसको कंप्यूटर को ऑपरेट करने के यूज में आता है। ठीक है, एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डाटा और प्रोग्राम होता है यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूट द स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, इन अनेबल्स द यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। ठीक है, ये जो होता है एनेबल करता है यूज़र को कि वो कंप्यूटर से इंटरेक्शन करे। ये सॉफ्टवेयर ही होता है जो कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर अबाउट द टास्क टू बी परफॉर्मेड एंड हाउ दिस टास्क आर टू बी परफॉर्मेड। ठीक है, इज नोन एज सॉफ्टवेयर। ठीक है, a set of instructions which control the sequence of operations are known as program. ठीक है, it is a sequence of instructions written to perform a specified task with a computer. ठीक है, opposite of hardware which describes the physical aspects of computer, software refers to application scripts, programs that run on a device. ठीक है, सॉफ्टवेयर इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द मेन सॉफ्टवेयर दैट रन्स द कंप्यूटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर यानी कि मेन सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को रन करता है। व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर, ठीक है, जब हम लोग कंप्यूटर खोलते हैं, ठीक है, computer system software activates the hardware and controls and coordinates their functioning. ठीक है, the applications programs are also controlled by system software. It is also known as background software. ठीक है, it consists of several programs which are directly responsible for controlling, integrating and managing the individual hardware components of a computer system. ठीक है, बायोस क्या होता है? इसमें बायोस होता है द बेसिक आउटपुट सिस्टम होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज कॉमनली नोन एज अ सिस्टम बायोस। ठीक है, बायोस कंट्रोल्स वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स within the main computer system. The initial functions of BIOS is to initialize system devices such as RAM, hard disk, CD drive, video display card and other hardwares. ठीक है, फोर टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आर एज फॉलोइंग। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स होता है, डिवाइसेस ड्राइवर्स होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? पहला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? Operating system is the program that acts as an interface between the user and the computer hardware and applications and application software. ठीक है, after the boot program, operating system manages all the other programs in a computer. ठीक है, जब बूट होने के बाद जब प्रोग्राम बूट हो जाता है ना, उसके बाद क्या होता है? जो सारा मैनेजिंग का पार्ट होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक, जैसे कि MS DOS हो गया, ये लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो गया, XP 2098, 2011 और विंडो 11 हो गया ना, एक विंडो 11, विंडो 9, विंडो 10, ये सारे विंडोज़ जो होते हैं वो OS होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, ये फॉलोइंग फंक्शन होता है। इट रिकॉग्नाइजेज इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड and sends output to the display screen. ठीक है, it makes sure that the programs running at the time same time do not interfere with each other. ठीक है, it also responsible for security and ensures that unauthorized users do not access the system. ठीक है, ये सारे काम होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है? यूटिलिटी प्रोग्राम्स हेल्प्स टू मैनेज, मेंटेन एंड कंट्रोल कंप्यूटर रिसोर्सेज। ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज सर्विस प्रोग्राम्स। एग्जाम्पल्स ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम्स है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, बैकअप सॉफ्टवेयर होते हैं, डिस्क डिफ्रेगमेंट होते हैं, बैकअप होते हैं, डिस्क क्लीन होता है, एक्सेट्रा।
पहला क्या है, डिस्क कंप्रेशन, ठीक है, इट इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी स्टोर्ड on a hard disk by compressing all information, ठीक है, stored on it. For example, disk doubler, super store pro, double disk gold, etc. नेक्स्ट क्या है, डिस्क फ्रेगमेंटर. फ्रेगमेंटर क्या होता है, इट डिटेक्ट्स कंप्यूटर फाइल्स whose contents are broken across several locations on the hard disk and moves the fragments to one location to increase efficiency, ठीक है. It can be used to rearrange files and unused space on your hard disk. For example, my different disk keeper, defregler, etc. Backup utilities कहते हैं, it can make a copy of all information stored on a disk and restore either the entire disk or selected files. Disk cleaner क्या होता है, it is used to find files that have not been used for a long time. This utility also serves to increase the speed of a slow computer. For example, bleach, bit cleaner, etc. Antivirus क्या होता है, it is the utility which is used to scan computer for viruses and prevent the computer system and files from being corrupt. For example, Kaspersky, AVG, McAfee, Avira, etc. ठीक है. टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, इट इज़ अ प्रोग्राम दैट facilitates the creation and correction of text, ठीक है. A text editor supports a special command for text editing is that you can write, delete and find and replace words, lines, graphs, paragraphs, etc. For example, MS Word, WordPad, Notepad, etc. in which Notepad is the most popular text editor. Next क्या है, device drivers. It is a software which is written with the objective of making a device functional when it is connected to the computer is called the device driver. A device driver is it is a system software that are designed to enable interaction with hardware devices, control a device that is attached to your computer. Every device, whether it is a printer, monitor, mouse, keyboard, CD-ROM, readers, disk drives, has a driver program associated with it for its proper functioning. नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. दो टाइप का सॉफ्टवेयर होता था ना, एक तो होता था, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया. दो टाइप का सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है. अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन्ड टू परफॉर्म specific task, ठीक है. It is a group of program designed to fulfill the demand of end user. Example, MS Office, PowerPoint, Windows Media Player. It does not control or coordinate the working of computer, ठीक है. Computer can run without application software. एक कंप्यूटर बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रन कर सकता है. Application software can be easily installed or uninstalled as required. Application softwares are also called the end user, ठीक है. End user programs. These programs do the real work for users, ठीक है. Microsoft Office Suite, Adobe Photoshop and any other software like payroll software or income software are application software. Next क्या है, there are two types of application software, basics application software and specific purpose software, ठीक है. Basic application software क्या होता है, basic application software is also known as general purpose applications and productivity applications. These programs are widely used in every discipline of an occupation, allow people to do simple computer tasks. Some of the general purpose software is as follows. Word processor होता है capable of creating, storing, printing out documents, ठीक है. Have ability to create a document and make changes anywhere in the document. For example, Microsoft Word Perfect, Windows only, Apple Works, Mac only, OpenOffice.org, Writer, etc. ठीक है, ये सब वर्ड प्रोसेसर है. इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स होता है. स्प्रेडशीट्स एप्लीकेशन आर द कंप्यूटर प्रोग्राम्स that accept data in tabular form and allow you to create and manipulate spreadsheet electronically. For example, जैसे कि MS Excel होता है, Corel Quattro Pro होता है, Lotus होता है 1 2 3, OpenOffice.org होता है, Calc, etc. गूगल का भी स्प्रेडशीट एक आ चुका है.
प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? यूज फॉर क्रिएशन ऑफ द स्लाइड्स एंड टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड। फॉर एग्जांपल MS पावर पॉइंट होता है, कोरल प्रेजेंटेशन होता है, लोटस फ्रीलांस ग्राफिक्स होता है, OpenOffice.org इम्प्रेस होता है। Database management system DBMS होता है। DBMS refers to a software that is responsible for sorting, maintaining and utilizing a database. For example, Microsoft Access हो गया, Coral Paradox हो गया, MySQL हो गया, OpenOffice हो गया। MySQL फेमस है, ठीक है। Desktop publishing DTP software, it is a tool. Software, it is a tool for graphic designers and non-designers to create visual communications for professional or desktop printing, as well as for online or on-screen electronic publishing. For example, Quarks, Express, Adobe PageMaker, 3v2, CorelDRAW, Corel Ventura, Illustrator, etc. Graphic software, image editing, it enables a person to manipulate visual images on a computer system. Most graphics software have the ability to import and export one or more graphics file formats. For example, DirectX, Adobe Photoshop, PZAP, Microsoft Publisher, Picasa, etc. multimedia software जैसे कि combination of text, audio, still images, animation, video or interactivity content forms. For example, Micromedia, Flash, Zillit Video Editor, VLC Media Player, Names, etc. Specialized application software जो होते हैं is designed for a specific task rather for a wide application area. This type of application software generally has one purpose to execute graphic programs, audio and video editors, multimedia creation programs, web authoring and virtual reality programs are common types of specialized software. Some of the special purpose software are as follows. पहला क्या है? Inventory management system and purchasing system, ठीक है। Inventory is a list of goods and materials available in a stock, ठीक है। Inventory management system is generally used in a departmental, ठीक है, ये departmental में use होता है, stores or in an organization to keep the records of the stock of all the physical records. Example, Fishbowl, Advance Pro, etc. Payroll management system क्या है? It is used by all modern organization to encompass every employer of the organization who receives a regular wages or other compensation. For example, namely Ultipro, etc. Hotel management system क्या होता है? It refers to the management technique used in the hotel sector. These can include hotel administration, accounts, billing, marketing, housekeeping, front office or front desk. For example, DJbo, Athia, HMS, Hotel Logics, PMS, etc. Reservation system क्या? Reservation system or a central reservation system, CRS, is a computerized system used to store and retrieve information and conduct transaction related to air travel, hotels, car rental or other activities. Today, a number of websites like yatra.com, makeMyTrip.com provide online booking for tourists, ठीक है। ये सब रिजर्वेशन भी कर सकते हैं। रिपोर्ट कार्ड जनरेटर, it is an application software which is commonly used in schools by the examination department to prepare and generate the report cards of the students. For example, e-report card. Accounting software it is application software that records and process accounting transactions within functional modules such as accounts, ठीक है, payable accounts, receivable, payroll and trial balance. For example, Tally, ERP होता है, 9 HDPOS होता है, मार्ग होता है, प्रॉफिट बुक होता है, एक्सेट्रा। बिलिंग सिस्टम में क्या है कि इट रेफर्स टू द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड
to perform the billing process. ठीक है, it handles the tracking of leveled products and services delivered to a customer or a set of customers. For example, billing manager, billing tracker, K billing etc. Open source software कौन कौन से होते हैं? Open source software जो होते हैं वो refers to something that can be modified and shared as it is designed are publicly accessible. जो publicly accessible होते हैं ना वो open source software होते हैं, उसको modify और shared भी कर सकते हैं. ठीक है, open source software is any computer software that is distributed with its source code available for modification. Example of open source जैसे कि Linux हो गया, Unix हो गया, MySQL हो गया. To be considered as open source software by the software development industry, certain criteria must be met are as follows. ठीक है, software must be available free or at a low cost. ठीक है, source code must be included, anyone must be allowed to modify the source code, modified version can be redistributed. ठीक है, the distribution terms of open source software must comply with the following criteria. पहला क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि फ्री रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. दूसरा क्राइटेरिया सोर्स कोड उसका होना चाहिए, इंटीग्रिटी ऑफ ऑथर सोर्स कोड होना चाहिए. ठीक है, द लाइसेंस शॉल नॉट रेस्ट्रिक्ट एनी पार्टी फ्रॉम सेलिंग और गिविंग अवे द सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, कंटेनिंग प्रोग्राम्स फ्रॉम सेवरल डिफरेंट सोर्सेज. द लाइसेंस शॉल नॉट रिक्वायर रॉयल्टी और अदर फी फॉर such sale. The program must include source code, allows distribution with source code as well as compiled form. ठीक है, the source code must be in the preferred form in which a programmer would modify the program. Integrity of author source code. ठीक है, the license may restrict source code from being distributed in modified form only. ठीक है, if the license allows the distribution of patch files with the source code for the purpose of modifying the program at build time. ठीक है, property software, it is a software that is owned by individual or company. There are always major restriction on it to use and its source code is always kept secret. Proprietary software जो होता है वो copyrighted होता है. NPOs limit against use distribution modification and that are imposed by its publisher, vendor or developer. तो proprietary software जो होता है ना वो किसी का copyright होता है उसमें, जैसे कि वो उसको further use नहीं कर सकते, उसमें limitation होती है, उसको modify नहीं कर सकते आप, limited source रहता है उसका. ठीक है, वो organization use करती है खुद ही. Main barriers for using a property software: license and maintenance of property software is very expensive. It is developed for a single purpose application and separately packaged. Vendor support is conditional to maintain distribution. And users have to dependent on the developer of property software for all updates, support and fixes. Low level of customization and adaptability. Adobe PageMaker is a typesetting tool which is used for desktop publishing. ठीक है, fully backup होता है उसका, contains a copy of every program, data and system file on a computer. Dash is a combination of software and hardware. Example ROM, PROM, EEPROM. ठीक है, freeware is a commonly used for copyrighted software that is given away for free by its owner. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है. Physical parts of a computer are called hardware. Set of instructions given to the computer is called software. ठीक है, you can touch, see, feel hardware. You cannot touch and feel software होता है वो. Hardware is constructed using physical materials or components. Software जो होता है वो develop कर writing instruction in programming language. Computer is hardware which operates under the control of software. The operation of computer are controlled through software. ठीक है, जैसे कि हार्डवेयर क्या हो गया, हमारा ढांचा हो गया हार्डवेयर, और ब्रेन हो गया हमारा सॉफ्टवेयर जिससे हमारा बॉडी वर्क करता है. सेम कंप्यूटर जो होता है वो हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जो इसके एप्लीकेशन होते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर हो जाते हैं. If hardware is damaged, it is replaced with new one. If software is damaged or corrupted, its backup copy will be reinstalled. Hardware is not affected by computer viruses. Software is affected by computer viruses. ठीक है, user cannot make
duplicate copies of the hardware. User can make many duplicate copies of the software. ठीक है. Hardware cannot be transferred electronic through the network. Software can be transferred from one place to another. ठीक है. That's it I think. So अब next topic है ये operating system and types and its function. ये next वीडियो में पढ़ेंगे. 20 मिनट का वीडियो हो गया. Okay then. तो आप लोगों को क्या करना है कि लाइक शेयर करना है, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करना है. ठीक है. Okay then, till then, have a good day. Take care of yourself and your love.